Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So, in continuation with our PYQ series on Constitution, here we are with the sixth video where we are going to discuss some questions, starting with the first one. Which constitutional amendment was passed by the Parliament to provide for reservation of EWS? Economic weaker section के लिए जो reservation का criteria आया है, that has come through which constitutional amendment? The correct answer for this one is option B, that is 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट PULLB 2019 का क्वेश्चन है ये, जिसमें 10% रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू द EWS कैटेगरी. EWS कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया है एंड द मेन थिंग इज कि जिन लोगों की इनकम पर एनम इनकम 8 लाख से नीचे है, दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द EWS कैटेगरी. Now considering that this is a constitutional amendment, ये जो amendment आई है, this has come to Article 15 and Article 16. Further clauses add करे गए हैं इन दोनों ही articles में, so you should know about this. Next question is, in India the writ of prohibition may be issued when there is what? Both absence of jurisdiction or excess of jurisdiction and violation of principles of natural justice. Violation of principles of natural justice, absence of jurisdiction or excess of jurisdiction, or a request to produce the body of the person. This is obviously the writ of habeas corpus. Now when we speak of violation of principles of natural justice, it is a part of the writ of prohibition, and also absence or excess of jurisdiction is also a part of writ of prohibition, because writ of prohibition basically means to stop, मतलब रोकना, to stop any court from or any body from exercising their jurisdiction which may be in excess or which may be in violation of principle of natural justice. Therefore जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए. Next question is, who amongst the following is responsible for revenue sharing between the state government and the local government? तो state और local government के बीच में revenue sharing कौन करता है? वो body है State Finance Commission. Option B is the correct answer. This body is responsible for sharing the revenue between these bodies. Finance Commission जो है, that is responsible for sharing between the states. Next question is, Clause 4 of Article 15 has been added to the Constitution of India by which amendment? तो Clause 4 को Article 15 में add करा गया है through the first amendment in the Constitution. This was the first amendment which was made, which provided for socially and educationally backward classes reservation for them. It said that government can make laws in order to protect them for advancement of these classes. इसके साथ ही साथ फर्स्ट अमेंडमेंट में और भी चीज़ें थी. वो क्या थी कि 9th शेड्यूल आया था जिसमें सारे लॉज को प्लेस कर दिया गया था और ये बोला गया था कि इन लॉज को इम्यूनिटी मिलेगी. एंड फर्दर आर्टिकल 19(2) जो हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे आर गिवन इन आर्टिकल 19(2) and a few of the categories were added to this particular article. What are those categories? Do let me know in the comment section. ये आपको पता होना चाहिए. All the amendments are important. I already have a video on the important amendments. You can go and check that. Which of the following is not included in the preamble? Next question. Socialist, justice, fraternity या morality? The correct answer to this one is option D. Morality जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के preamble में included नहीं है. Socialist दिया हुआ है, state is socialist in nature, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट जो है वो इस तरह से है. जस्टिस भी दिया हुआ है कि स्टेट शुड अचीव जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस स्टेट को अचीव करना है. एंड फ्रेटर्निटी इन द सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज गिवन इन द प्रीएम्बल. सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. देन सिक्स्थ one is, the age of retirement of a high court judge is what? The age of retirement of high court judge is 62 years. Option A is the correct answer. 65 years जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज है. BHULLB 2019 का क्वेश्चन. Then question 7 says कि 6th schedule of Constitution of India deals with administration of tribal areas for which state? सो जो ट्राइबल एरियाज हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, ये जो एरियाज हैं ये प्लेस्ड हैं 6th शेड्यूल में. देन नेक्स्ट इज विच प्रोविजन. नाउ दिस पर्टिकुलर
schedule is also important from the point of view of the NRC जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है नया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है. Then which of the provision of Constitution of India deals with legislative power of the President? President की legislative power जो है वो given है under Article 123. President किस तरह से अपनी legislative power exercise करता है? Through an ordinance. तो जो लेजिस्लेचर है वो बिल्स एक्ट्स वगैरह बनाता है और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास करता है व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. Then next is a legislation enacted by the state legislature falls in which category? तो state legislature जो law बना रही है वो कौन सी category में आएगा? Subordinate, supreme, autonomous या delegated? ये जो legislation है ये autonomous category में आएगा. Option C is the correct answer here. Supreme legislation obviously is made by the parliament, it is made by the legislature. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है, जो एडमिन बॉडीज हैं, दे मेक दिस लेजिस्लेशन. देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्ट होते हैं? दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, mostly nominated directly as well as indirectly, or they are elected by members of legislative assembly and legislative council of state. So members of Rajya Sabha जो हैं they are elected by members of legislative assembly and legislative council of state. ये दोनों ही मिलके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है. जस्ट इन केस एनी डाउट्स और क्वेरीज आर देयर, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन और एनी अदर इश्यूज, देन आई एम अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके लिंक ऑलरेडी गिवन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram.